students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying a very interesting chapter of our grammar, that is he and she words. So what are he and she words? They are basically known as pronouns, but in your standard he and she हम मतलब आप लोगों के स्टैंडर्ड में इसको ही और शी लेकर चलेंगे, और जब हम बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे देन हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस बोलेंगे. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस. So the title of our chapter is he and she words, right? So which words do you use for yourself? हम अपने लिए क्या words use करते हैं? देखिए he words use करते हैं, she words use करते हैं. he words हम males के लिए use करते हैं, whereas she हम female के लिए use कर सकते हैं. So the naming words are of two types, he words and she words. देखिए naming words क्या होते हैं? Noun, जो कि दो टाइप के होते हैं, he words और she words, right? अब इंग्लिश ग्रामर में ही वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज मेल्स और मैस्कुलिन जेंडर. हम उनको क्या बोलते हैं? मेल्स और मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं. जैसे कि बॉय, राइट, देन इट्स मैन. मैन ए एन है, एक ही इंसान के लिए, मतलब एक ही मेल के लिए है. देन कम्स द पीकॉक, राइट. तो दीज अबव वर्ड्स बॉय, मैन एंड पीकॉक, ये क्या है? ही वर्ड्स हैं, राइट. एंड दे आर यूज्ड फॉर द मेल्स. और ये किसके लिए यूज होते हैं? ये मेल्स के लिए यूज होते हैं, राइट. एंड शी वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज फीमेल्स, और यू कैन से फेमाइन जेंडर, मतलब ये फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए यूज होते हैं. जैसे कि यू कैन सी इट्स गर्ल, राइट, देन इट्स वुमेन, देन इट्स पीहन, पीकॉक का पीहन, राइट. नाउ तो द अबव वर्ड्स गर्ल, वुमेन, पीहन, दे ऑल आर शी वर्ड्स. इनको हम क्या बोलते हैं? शी वर्ड्स बोलते हैं. एंड दे आर used for the females, और ये किसके लिए यूज होती है? फीमेल के लिए. now we will be learning, we'll learn the following he words and she words, right. So first is father. father का क्या हो गया? mother, right. grandpa मतलब हमारे दादाजी, और ये क्या हो गई? हमारी grandma मतलब दादी जी. nephew मतलब भतीजा, niece मतलब भतीजी. then it's brother, then it's sister, we all know भाई बहन. sir का madam, right. lion का lioness, right. डियर का क्या होता है? फीमेल डो, राइट. और ये जो डो है ये फीमेल डियर के लिए नहीं, डियर के अलावा भी गोट के लिए, और यू कैन से लाइक वन मोर थिंग, दैट इज रैबिट के लिए भी यूज किया जाता है, राइट. डॉग का क्या हो गया? बिच, राइट. नाउ अगेन इट्स सन का डॉटर, राइट. एंड अंकल का आंट, हस्बैंड का वी ऑल नो वाइफ, किंग का क्वीन, राइट. प्रिंस का प्रिंसेस, राइट. देन फॉक्स का विक्सन, हॉर्स का मेयर, एंड कॉक का hen, right. Now just recap on this, that naming words are of two types, he words and she words. he words are used for the males, whereas she words are used for the females, right. he words are also known as masculine gender के लिए use होते हैं, और she words are also known as feminine gender. Now moving on to the exercise, first we'll be doing the correct answers. तो he words are also known as, he words के लिए हम क्या बोलेंगे? they are males, where and this is a he word. he word क्या है यहाँ पे? nephew, right. now this is a she word. she word क्या है? sister and mother, both are she words, right. now this is not a she word, that is dog, right. now you have to match the he words with the suitable she words. देखिए uncle का क्या होता है? aunt, right. brother का sister, we all know this. then dog का we all know which. deer का doe, right. king का queen, and last one prince का princess, right. now we have to make the she words. father का क्या होता है? mother, right. son का क्या होता है? daughter. बेटा का बेटी, right. nephew का niece, and lion का lioness, right. fox का vixen, we all know this. ox का oxen, and sir का madam, and horse का mare, right. now we have to write down कि कौन सा वर्ड ही है, कौन सा वर्ड शी है. देखिए फादर है तो ये ही है, राइट. सिस्टर है तो वो हमारी शी है, बिकॉज शी इज अ फीमेल. डो क्या है? शी है, शी इज द फीमेल ऑफ डियर. एंड हॉर्स क्या है? ही है. मदर इज अगेन शी, whereas dog is he. witch is she, and aunt, she is again she, right. peacock is he,
and hen is of course he, right? I hope you all understood this chapter. This chapter was quite easy, but it is actually linked to the previous one, जहाँ पे हम लोग नेमिंग वर्ड्स पढ़कर आए हैं, मतलब नाउन्स. तो बेसिकली नाउन्स ही हैं जो फर्दर दो टाइप पे हैं, ही वर्ड्स और शी वर्ड्स, जिसमें ही इज यूज फॉर दी males whereas she is used for the female. And when we will proceed to the further higher standards, we will be studying more type of gender, that is neutral gender and transgender, that we'll be studying in higher standards. Please go through the previous chapter and please do revise it, and please make sure that you have the habit of reading your textbooks or whatever storybooks that you came across, and please keep studying hard for your exams and stay blessed. Thank you.